केते मंगे जोत अपार, केत्या गणत नहीं विचार, केते खप टूटहे बेकार, केते ले मुकर पाए, केते मूर्ख खाही खाए, केत्या दुख भूख सदमार, एह पेतात तेरी तातार, पंध खलासी पान होए, होर आख न सके कोई, जेको खायक आकन पाए, ओह जाने चेत्या मोहे खाए, आपे जाने आपे दे, आखे से बे कही के, जिसनो बख्शे सिफत सलाह, नानक पातशाही पातशाह, बहुता कर्म लिखिया ना जाए, वड्डा दाता तिल न तमाए, केते मंगे जोत अपार, केत्या गणत नहीं विचार, केते खप टूटहे बेकार, केते ले मुकर पाए, केते मूर्ख खाही खाए, केत्या दुख भूख सदमार, एह पेतात तेरी तातार, पंध खलासी पान होए, होर आख न सके कोई, जेको खायक आकन पाए, ओह जाने चेत्या मोहे खाए, आपे जाने आपे दे, आखे से बे कही के, जिसनो बख्शे सिफत सलाह, नानक पातशाही पातशाह, बहुता कर्म लिखिया ना जाए, वड्डा दाता तिल न तमाए, केते मंगे जोत अपार, केत्या गणत नहीं विचार, केते खप टूटहे बेकार, केते ले मुकर पाए, केते मूर्ख खाही खाए, केत्या दुख भूख सदमार, एह पेतात तेरी तातार, पंध खलासी पान होए, होर आख न सके कोई, जेको खायक आकन पाए, ओह जाने चेत्या मोहे खाए, आपे जाने आपे दे, आखे से बे कही के, जिसनो बख्शे सिफत सलाह, नानक पातशाही पातशाह, बहुता कर्म लिखिया ना जाए, वड्डा दाता तिल न तमाए, केते मंगे जोत अपार, केत्या गणत नहीं विचार, केते खप टूटहे बेकार, केते ले मुकर पाए, केते मूर्ख खाही खाए, केत्या दुख भूख सदमार, एह पेतात तेरी तातार, पंध खलासी पान होए, होर आख न सके कोई, जेको खायक आकन पाए, ओह जाने चेत्या मोहे खाए, आपे जाने आपे दे, आखे से बे कही के, जिसनो बख्शे सिफत सलाह, नानक पातशाही पातशाह, बहुता कर्म लिखिया ना जाए, वड्डा दाता तिल न तमाए, केते मंगे जोत अपार, केत्या गणत नहीं विचार, केते खप टूटहे बेकार, केते ले मुकर पाए, केते मूर्ख खाही खाए,
ਕੇ ਤਿਆਗ ਦੁੱਖ ਭੁੱਖ ਸਦ ਮਾਰ। ਇਹ ਬੇਤਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ, ਪੰਧ ਖਲਾਸੀ ਪਾਣੇ ਹੋਏ। ਹੋਰ ਆਖ ਨ ਸਕੇ ਕੋਈ, ਜੇ ਕੋ ਖਾਇਕ ਆਖਣ ਪਾਏ। ਉਹ ਜਾਣੇ ਚੇਤਿਆ ਮੋਹਿ ਖਾਏ, ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਆਪੇ ਦੇ। ਆਖੇ ਸੇ ਬੇ ਕਈ ਕੇ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ। ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤਿਲ ਨ ਤਮਾਏ, ਕੇਤੇ ਮੰਗੇ ਜੋਤ ਅਪਾਰ। ਕੇਤਿਆ ਗਣਤ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ, ਕੇਤੇ ਖਪ ਟੁਟਹਿ ਬੇਕਾਰ। ਕੇਤੇ ਲੈ ਲੈ ਮੁਕਰ ਪਾਏ, ਕੇਤੇ ਮੂਰਖ ਖਾਹੀ ਖਾਏ। ਕੇਤਿਆ ਦੁੱਖ ਭੁੱਖ ਸਦ ਮਾਰ, ਇਹ ਬੇਤਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ। ਪੰਧ ਖਲਾਸੀ ਪਾਣੇ ਹੋਏ, ਹੋਰ ਆਖ ਨ ਸਕੇ ਕੋਈ। ਜੇ ਕੋ ਖਾਇਕ ਆਖਣ ਪਾਏ, ਉਹ ਜਾਣੇ ਚੇਤਿਆ ਮੋਹਿ ਖਾਏ। ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਆਪੇ ਦੇ, ਆਖੇ ਸੇ ਬੇ ਕਈ ਕੇ। ਜਿਸਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ। ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤਿਲ ਨ ਤਮਾਏ, ਕੇਤੇ ਮੰਗੇ ਜੋਤ ਅਪਾਰ। ਕੇਤਿਆ ਗਣਤ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ, ਕੇਤੇ ਖਪ ਟੁਟਹਿ ਬੇਕਾਰ। ਕੇਤੇ ਲੈ ਲੈ ਮੁਕਰ ਪਾਏ, ਕੇਤੇ ਮੂਰਖ ਖਾਹੀ ਖਾਏ। ਕੇਤਿਆ ਦੁੱਖ ਭੁੱਖ ਸਦ ਮਾਰ, ਇਹ ਬੇਤਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ। ਪੰਧ ਖਲਾਸੀ ਪਾਣੇ ਹੋਏ, ਹੋਰ ਆਖ ਨ ਸਕੇ ਕੋਈ। ਜੇ ਕੋ ਖਾਇਕ ਆਖਣ ਪਾਏ, ਉਹ ਜਾਣੇ ਚੇਤਿਆ ਮੋਹਿ ਖਾਏ। ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਆਪੇ ਦੇ, ਆਖੇ ਸੇ ਬੇ ਕਈ ਕੇ। ਜਿਸਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ। ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤਿਲ ਨ ਤਮਾਏ, ਕੇਤੇ ਮੰਗੇ ਜੋਤ ਅਪਾਰ। ਕੇਤਿਆ ਗਣਤ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ, ਕੇਤੇ ਖਪ ਟੁਟਹਿ ਬੇਕਾਰ। ਕੇਤੇ ਲੈ ਲੈ ਮੁਕਰ ਪਾਏ, ਕੇਤੇ ਮੂਰਖ ਖਾਹੀ ਖਾਏ। ਕੇਤਿਆ ਦੁੱਖ ਭੁੱਖ ਸਦ ਮਾਰ, ਇਹ ਬੇਤਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ। ਪੰਧ ਖਲਾਸੀ ਪਾਣੇ ਹੋਏ, ਹੋਰ ਆਖ ਨ ਸਕੇ ਕੋਈ। ਜੇ ਕੋ ਖਾਇਕ ਆਖਣ ਪਾਏ, ਉਹ ਜਾਣੇ ਚੇਤਿਆ ਮੋਹਿ ਖਾਏ। ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਆਪੇ ਦੇ, ਆਖੇ ਸੇ ਬੇ ਕਈ ਕੇ। ਜਿਸਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ। ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤਿਲ ਨ ਤਮਾਏ, ਕੇਤੇ ਮੰਗੇ ਜੋਤ ਅਪਾਰ। ਕੇਤਿਆ ਗਣਤ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ, ਕੇਤੇ ਖਪ ਟੁਟਹਿ ਬੇਕਾਰ। ਕੇਤੇ ਲੈ ਲੈ ਮੁਕਰ ਪਾਏ, ਕੇਤੇ ਮੂਰਖ ਖਾਹੀ ਖਾਏ। ਕੇਤਿਆ ਦੁੱਖ ਭੁੱਖ ਸਦ ਮਾਰ, ਇਹ ਬੇਤਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ। ਪੰਧ ਖਲਾਸੀ ਪਾਣੇ ਹੋਏ, ਹੋਰ ਆਖ ਨ ਸਕੇ ਕੋਈ। ਜੇ ਕੋ ਖਾਇਕ ਆਖਣ ਪਾਏ,
ओह जाने चेत्या मोहे खाए, आपे जाने आपे दे, आखे से बे कई के, जिसनो बख्शे सिफत सलाह, नानक पातशाही पातशाह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। And just remind us of what this Puri says in English. His blessings are so abundant there can be no written account. The great giver does not hold back anything. So many great heroic warriors beg at the door of the infinite Creator. So many contemplate and dwell upon this, they cannot be counted. So many waste away to death engaged in corruption. So many take and take again and then deny receiving. So many foolish consumers keep on consuming. So many endure distress, deprivation, and constant abuse. Even these are the blessings of the great giver. Liberation from bondage comes only by Spirit's will. No one else has any say in this. If some fools should presume to say that they do, they shall learn and feel the effects of their folly. Spirit knows, Spirit gives. Few, very few, are those who acknowledge this. One who is blessed to sing of the wonders of the infinite, O Nanak, is the King of Kings. And today I wanted to really focus on the first two lines, which says, its blessings are so abundant there can be no written account. The great giver doesn't hold back anything. The great giver doesn't hold back anything. And it takes a lot to understand and to accept this, that actually universe doesn't hold back anything from us. You know, she gives us whatever we need and more. Actually, much more. But to cleanse our minds and to open up our eyes and to open up our ears to the sound that is constantly vibrating and constantly is shared with us, it's we have to do some actions. We have to we have to cleanse the mind, we have to cleanse the vision, we have to cleanse the ears, we have to relearn how to listen, relearn how to see, relearn how to get the mind cleaner from the pollution. So and that's what I would really like to focus today's class on. So let's just tune in. Relax your shoulders, close your eyes gently, focus at the third eye, and feel your sit bones on the floor, on the mat, on the bed. Just really root through that. And imagine that you just locked away all of the hustle and bustle of life outside, and you just concentrating your attention on now, on the breath that flows through you now. Inhale deeply. Exhale completely. Inhale again. Exhale. And let's inhale to begin. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo
stretching the spine nice and tall, squeezing the root lock, and setting the intention for today's class. When you're ready, exhale and release the lock. Lovely to welcome you back in the class. Missed you. Some of you I haven't seen for a long, long time. Sending you massive, massive hug. Okay, so let's begin the warm-up. And let's just open up our pelvis. So hold on to the feet, sit nice and tall, and we're going to flap the knees up and down, and the breath is going to be long and deep. Okay, breath is not connected to the movement of your knees. Close your eyes and begin breathing deeply. And just move your knees, heels closer to your groin, and just continue for the last 30 seconds. And please inhale, stretch the spine, squeeze root lock, anus, perineum, navel. Crystallize within yourself. As you exhale, release the lock, open your legs out. So keep the feet flexed as you do this. I think I've still got the dirt from India on my feet. I need to proper scrub the feet to get rid of it. So we're going to inhale to center, turn to the leg, exhale towards the leg, come up, inhale, exhale to the other leg. Okay, and just do this in a rhythm that's good for you. Yeah, that's fine. I can see you there on the floor. Keep the feet flexed.
Please inhale to center, stretch up. As you exhale, come forward. Exhale completely, hold the breath out. Squeeze root lock, anus, perineum, navel as you're stretching forward. And then inhale, release the lock and shake out your legs. Give them a bit of a rub. Good. Excellent. And let's do the drops. So you're gonna sit with your legs stretched out, and we're going to lift ourselves off the floor completely and then drop ourselves down on the floor, exhaling, okay? That's right, keep going. Let everything shake. Very nice. Keep your eyes closed. We're here just for a short period of time. Wonderful. Inhale, stretch up. Squeeze root lock. Exhale, release. Good. Come back sitting in easy pose. Hold on to the ankles. We're going to do the flex. Okay, inhaling forward, exhaling back. So just to remind you, we're moving the pelvis out and in, out and in, but also opening the chest. Inhale, exhale, inhale, exhale. Okay, keep eyes focused in the third eye.
Lovely. Please inhale to center. Stretch up, squeeze root lock. Consolidate within yourself. Exhale, release the lock. You can turn your palms upside down. Feel the grace that flows onto you. Great. We're going to do the spinal twists. So hands on the shoulders. Keep the upper arms parallel to the floor, okay? And as you twist, inhale to your left, exhale to your right. Allow the chest to open up, breathing equal amounts and exhaling equal amounts. Please come to center, inhale. Stretch the spine, squeeze root lock. Feel that energy within yourself. Exhale, release the hands, release the lock. If you want to swap the legs over, you can do. Otherwise, place your hands on your knees. We're going to do the shoulders now. So as we inhale, bring the shoulders up all the way up to the ears. As you exhale, drop the shoulders in and out through the nose. And again, find your rhythm with this. Excuse me.
loosening up your shoulders, moving the energy in the shoulders, dropping the unnecessary weight. Last 20 seconds. And please inhale, shoulders all the way up. Crunch the shoulders, crunch, 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 crunch. Cannon breath out through the mouth, drop the shoulders. Inhale again. Crunch the shoulders up as high as you can, all the way up. And a bit more. More. Cannon breath out. Drop the shoulders. Last time, inhale. Crunch, crunch, crunch. High, 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 high. Tight, tight, tight. Cannon breath out. Drop all that weight. Excuse me. Turn your palms over. You need to. And you can turn your hands onto the knees again. We're going to begin to roll the neck all the way around. Just the neck is going to move. So the chin to the chest, ear to the shoulder, allowing all the lovely crackling to happen. And as we inhale, when the head goes towards the back, and exhale when the head rolls forward. So find your nice rhythm. And next time your head rolls forward, please change direction and go the other way, keeping the same breath
Inhaling back, exhaling forward. Be mindful that only your neck and head are rolling, so the rest of your spine is staying straight and still. And gently bringing your head into upright position into the center, taking a deep breath in. Suspending that breath within you, floating on that pillow of breath. Floating high, high, high. And gently releasing that breath. And relaxing. Okay, so we finish off the warm-up with ego eradicator. And ego eradicator doesn't mean we're going to completely get rid of ego. We need ego, of course, you know, to do our humanly things. So it takes an ego. But what we need to make sure is that we're not run by ego. Ego is kind of behind us and pushing us and supporting us, but not leading the way, having us by the nose, like you go in here, you go in there. Okay, so that's the idea. So the mudra is fingertips are on the pads. Stretch out the thumb so you feel that stretch of on the pad, and the pad becomes really flat and nice. And then you bring the arms to 60 degrees. And in this position, if you remember to do the breath of fire, please do the breath of fire. If you're on your moon cycle, you can just do slow, deep breathing, okay? Eyes are closed, focused in the third eye, or between the arms, on that space between the arms. Please begin the breath. Last 30 seconds.
You can do it. Keep those arms straight. And please inhale deeply. Squeeze root lock. Touch the thumbs above your head and straighten the fingers out. Keep the position. Exhale completely. Hold the breath out. Squeeze root lock. Pull up on the diaphragm. Neck lock. Release the lock. Inhale. Bring the hands over your aura. You can dig the fingers into the floor or the surface you're sitting on, or just relax. Okay. So, I would like to introduce you a wonderful practice today. It's called Jap Sahib, and it's a morning prayer, actually very similar to Japji Sahib, because in that prayer it's basically you kind of saying hello to the God, to universe, to your infinite self, whatever it is for you. And it is said in a specific manner, in the manner of bowing. I don't know if you know, there's different traditions, use bowing or prostrations, or, in the way of greeting the divine. And the idea of it is that we bring our head below our heart, meaning that we don't ponder to what is happening in the head, but we actually bow to what is happening in the heart. We start listen to what is happening in the heart. And we are all full of paradoxes, right? We have left and the right, we have masculine and feminine, we have the front and the back, all in one body, and we have to kind of integrate it, make it work. And the paradox is also that as much as it's important us to be individuals and be with ego and have our own identities, but it's also very important that we feel the part of divinity, that we feel that a part of the ocean that we're in, or the environment that we're in, like to merge with that. So we have to integrate both of those like ends of the spectrum into within us. And that's the whole paradox. And if you can master that, then like life is easy. You start accepting like everything and everyone. So there will be a word in that sahib, in that prayer, namastang, and we bow to namastang. There will be 4 in a row, and then again 4 in a row. There will be couple of namastangs in a row. There could be 3 namastangs. The idea is that you really start to listen to what is kind of streamed to you. And this also trains our ability to listen to what universe is asking of us, because it's not asking for whatever, it doesn't really have an agenda, but it's continuously conversing with us, continuously vibrating. And if we can tune into that frequency, and if we can hear what is asked of us as this individuum, as this part of infinite, then the life becomes really, really easy, because we then flow and we follow the movement, rather than we as a drop of the river
decide, okay, river is flowing that way, I decide to jump out and sit on the stone or whatever, and then the sun comes out and we completely like dissipate because we evaporated. I mean, it's just the story, but this is the whole idea. So when we flow with infinite together, then life is happening for us. We don't have to have so much effort. We don't have to make so much effort for things to happen. And that is the flow of prosperity, is to be one with oneness and to be one with everything around us. And like in Japji, it says that in the Puri that we read today, it says, the great giver does not hold back anything. So everything is available to us. We just need to start to hear, start to listen that flow and become synchronized with that flow. Yeah. So the posture in which we do this, it's sitting on the heels, okay, and you can pad it up with cushions and what have you. And every namastang we will bow. So if you need to put something in front of you as well to make it easier for the bowing. So namastang, namastang, namastang. And then when there's no namastang, we just sit up and we listen. If your legs get tired, just go into easy position, easy pose, until you can go back to sitting on your heels. That's it, really. Let's begin. ओंकार सतगुर प्रसाद श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जाप श्री मुखवाक पातशाही दसवीं छपे छंद तप प्रसाद। चक्र चेन अर बरन जात अर पात नहन जे, रूप रंग अर रेख पेख को कह ना सकत कही। अचल मूरत अनपौ प्रकाश अमितोज कहिजै, कोट इंद्र इंद्राण साहो साहान गणिजै। त्रिपाण महीप सुर नर असुर नेत नेत बन तृण कहत, तव सर्व नाम कथै कवन कर्म नाम बरनत सुमत। भुजंग प्रयात छंद नमस्त्वं काले नमस्त्वं कृपाले नमस्त्वं रूपे नमस्त्वं अनूपे। नमस्तं पेखे नमस्तं लेखे नमस्तं काये नमस्तं जाये। नमस्तं गंजे नमस्तं बंजे नमस्तं नामे नमस्तं ठामे। नमस्तं कर्मं नमस्तं अधर्मं नमस्तं अनामं नमस्तं अधामं। नमस्तं जीते नमस्तं भीते नमस्तं वाहे नमस्तं अटाहे। नमस्तं अनीले नमस्तं अनादे नमस्तं छेदे नमस्तं अगाधे। नमस्तं गंजे नमस्तं बंजे नमस्तं उदारे नमस्तं अपारे। नमस्तं सोएके नमस्तं अनेके नमस्तं अभूते नमस्तं अजूपे। नमस्तं निर्कर्मे नमस्तं निर्भरमे नमस्तं निर्देशे नमस्तं निर्भेशे। नमस्तं निर्नामे नमस्तं निर्कामे नमस्तं निर्धाते नमस्तं निर्घाते। नमस्तं निर्धूते नमस्तं अभूते नमस्तं अलोके नमस्तं अशोके। नमस्तं निर्तापे नमस्तं अथापे नमस्तं तिर्माने नमस्तं निधाने। नमस्तं अगाहे नमस्तं अबाहे नमस्तं तिर्वर्गे नमस्तं असर्गे। नमस्तं परभोगे नमस्तं सुजोगे नमस्तं अरंगे नमस्तं अभंगे। नमस्तं अगम्ये नमस्सत्रम्ये नमस्तं जलाश्रे नमस्तं निराश्रे। नमस्तं अजाते नमस्तं अपाते नमस्तं अमजबे नमस्सत अजबे। अदेशं अदेशे नमस्तं
अभेसे नमस्तं निर्धामे नमस्तं निर्वामे। नमो सर्वकाले नमो सर्वदयाले नमो सर्वरूपे नमो सर्वभूपे। नमो सर्वखापे नमो सर्वथापे नमो सर्वकाले नमो सर्वपाले। नमस्सत्देवे नमस्तं अभेवे नमस्तं अजन्मे नमस्तं सुवन्मे। नमो सर्वगौणे नमो सर्वभौने नमो सर्वरंगे नमो सर्वभंगे। नमो कालकाले नमः सद्दयाले नमस्तं अवर्णे नमस्तं अमरणे। नमस्तं जरारं नमस्तं कीर्तारं नमो सर्वतंदे नमो सतस अबंदे। नमस्तं निर्साके नमस्तं निर्वाके नमस्तं रहीमे नमस्तं करीमे। नमस्तं अनंते नमस्तं महन्ते नमस्सत्रागे नमस्तं सुहागे। नमो सर्वसोखं नमो सर्वपोखं नमो सर्वकर्ता नमो सर्वहर्ता। नमो जोग जोगे नमो भोग भोगे नमो सर्वदयाले नमो सर्वपाले। चाचरी छंद तप प्रसाद अरूप है अनूप है अजू है अबू है अलेख है अपेख है अनाम है अकाम है। अधे है अबे है अजीत है अभीत है तिरमान है निदान है तिरवर्ग है असर्ग है। अनिल है अनाद है अजय है आजाद है अजन्म है अवर्ण है अभूत है अभर्ण है। अगंज है अपंज है अजूज है अजंज है अमीक है रफीक है अतंद है अबंद है। निर्बूझ है असूझ है अकाल है अजाल है अला है अजा है अनंत है महंत है। अलीक है निर्सीक है निर्लंब है असंभ है अगम है अजम है अपूत है अछूत है। अलोक है अशोक है अकर्म है अभर्म है अजीत है अभीत है अबा है अगा है। अमान है निधान है अनेक है फिर एक है अमान है निदान है अनेक है फिर एक है। भुजंग पर्यात छंद नमो सर्वमानी समस्ति निधाने नमो देव देवे अपेखी अपेवे। नमो काल काले नमो सर्वपाले नमो सर्वगौणे नमो सर्वपौणे। अनंगी अनाथे निरसंगी परमाते नमो पान पाने नमो मान माने। नमो चंद्र चंद्रे नमो पान पाने नमो गीत गीते नमो तान ताने। नमो नृत्य नृत्य नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे। अनंगी अनामी समस्ति स्वरूपे परभंगी परमाते समस्ति विभूते। कलंकं दिनाने कलंकी स्वरूपे नमो राज राजे स्वर्ण परम रूपे। नमो जोग जोगे स्वर्ण परम सिद्धे नमो राज राजे स्वर्ण परम वृद्धे। नमो शस्त्र पाणे नमो अस्त्र माणे नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता। अपेखी अपरमी अपोगी अपुगते नमो जोग जोगे स्वर्ण परम जुगते। नमो नित्य नारायणे करूर कर्मे नमो प्रेत अप्रेत देवे सुधर्मे। नमो रोग हरता नमो राग रूपे नमो साह साहं नमो पूप पूपे। नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्तं सनाने। नमो मंत्र मंत्रं नमो जंत्र जंत्रं नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रं। सदा सच्चिदानंद सर्वं प्रणासी अनूपे अरूपे समस्तुल निवासी। सदा सिद्ध दा बुद्ध दा वृद्ध करता अदो उर्ध अर्धं अगं ओग हरता। परं परम परमेश्वरं तोष पालन सदा सर्वदा सिद्ध दाता दयालं। अछेदी अपेदी अनामं अकामं समस्तो पराजी समस्त धामं। तेरा जोर चाचरी छंद
जले हैं थले हैं अभीत हैं अबे हैं, प्रभु हैं अजू हैं आदेश हैं अभेश हैं। कोई अंग पर्यात छंद अगाधे आबादे आनंदी स्वरूपे, नमो सर्वमाने समस्ति निधाने। नमस्त्वं निर्नाथे नमस्त्वं परमार्थे, नमस्त्वं अगंजे नमस्त्वं अभंजे। नमस्त्वं अकाले नमस्त्वं अपाले, नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे। नमो राज राजे नमो साज साजे, नमो शाह शाहे नमो माह माहे। नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते, नमो रोख रोखे नमो सोख सोखे। नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे, नमो सर्व जीतं नमो सर्व प्रीतं। नमो सर्व ज्ञानं नमो परमतानं, नमो सर्व मंत्रं नमो सर्व जंत्रं। नमो सर्व दृश्यं नमो सर्व कृष्णं, नमो सर्व रंगे तिरभंगी अनंगे। नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे, अखिजे अपिजे समस्तं प्रसिजे। कृपालं स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी, सदा सर्वदा रिद्ध सिद्धं निवासी। चरपट छंद तप प्रसाद अमृत कर्मे अभृत तरमे, अखल जोगे अचल भोगे। अचल राजे अटल साजे, अखल तरमं अलख कर्मं। सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं पाने सर्वं माने। सर्वं प्राणं सर्वं पुगता सर्वं जुगता। सर्वं देवं सर्वं पेवं, सर्वं काले सर्वं पाले। रुआल छंद तप प्रसाद आद रूप अनाद मूरत अजोन पुरख अपार। सर्व मान तिरमान देव देव आद उदार। सर्व पालक सर्व कालक सर्व को पुण्य काल। जत्र तत्र विराज ही अवधूत रूप रसाल। नाम ठाम न जात जाकर रूप रंग न रेख। आद पुरख उदार मूरत अजोन आद असेख। देश और न पेश जाकर रूप रेख न राग। जत्र तत्र दिशा विशा हुए फैले अनुराग। नाम काम बहीन पेखत काम हुनह जाहे। सर्व मान सर्वत्र मान सदैव मानत ताहे। एक मूरत अनेक दर्शन कीन रूप अनेक। खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक। देव पेव न जान ही जेह वेद और कतेब। रूप रंग न जात पात सो जान ही के जेब। तात मात न जात जाकर जन्म मरण विहीन। चक्कर बक्र फिरे चत्र चक मान ही पुरतीन। लोक 14 के बिखे जग जाप जेह जाप। आद देव अनाद मूरत थाप्यो सब जेह थाप। परम रूप पुनीत मूरत पूरन पुरख अपार। सर्व विश्व रच्यो स्वयंभव गणन पंजन हार। कालहीन कला संयुक्त अकाल पुरख आदेश।
कर्म ताम सो परम रहत अपूत अलख अपेस अंग राग न रंग जाके जात पात न नाम गर्भ गंजन दुष्ट पंजन मुकत दायक काम आप रूप अमीक अनुस्तत एक पुरख अवधूत गर्भ गंजन सर्व पंजन आद रूप असूत अंगहीन अपंग अनातम एक पुरख अपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतिपार सर्व गंता सर्व हंता सर्व ते अनपेख सर्व शास्त्र ना जानहि जे रूप रंग अर रेख परम वेद पुराण जाके नेत पाखत नेत कोट सिमरत पुराण शास्त्र न आवै वह चेत मधुपार छंद तप प्रसाद गुण गण उदार महिमा अपार आसन अपंग उपमा आनंद अनपव प्रकाश निस दिन अनास आजान बाहो सहान साहो राजान राज पानान पान देवान देव उपमा महान इंद्रान इंद्र बालान बाल रंकान रंक कालान काल अनपूत अंग आभा अभंग गटमित अपार गुण गण उदार मुनगन प्रणाम निर्भय निकाम अतदुत प्रचंड मितगत अखंड आलेस्य कर्म आद्रेस्य धर्म सर्वाभरणाड्य अनदंड बाड्य चाचरी छंद तप्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियं करियं निर्नामे अकामे गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियं करियं निर्नामे अकामे भुजंग पर्यात छंद चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने चतर चक्र वर्ती चतर चक्र भरती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र माने चतर चक्र दाने चाचरी छंद न सत्रय न मित्रय न परमं न पित्रय न कर्मं न काये अजन्मं न जाये न चित्रय न मित्रय परे है पवित्र पृथ्वी से अधिसय अदृश्य अकृसय भगवती छंद तव प्रसाद कथते के आछिज देश के आपिज पेश के आगंज कर्म के आपंज परमे के आपिज लोके के आदित्य सोके के अवधूत बरने के विभूत करने के राजन परवाह है के धर्मं तुजा है के आशोक बरने के सर्वा आभरने के जगतं कीर्ति है के छत्रं छत्री है के बर्मं स्वरूपे के अनुभव अनूप है के आद अदेव है के आप अपेव है के चित्र विहीन है के एक है अधीन के रोजी रजा के रही में रेहा के पाक बेऐब है के गैबुल गैब है के अफुल गुना है के शाहन शाह है के कारण कुनिंद है के रोजी दहिंद है के राज़ रहीम है के कर्मं करीम है के सर्वं कली है के सर्वं दली है के सर्वत्र माने के सर्वत्र दाने के सर्वत्र गौने के सर्वत्र पौने के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र साज है के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन है के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पाहो
कि सर्वत्र देश है, कि सर्वत्र पेश है, कि सर्वत्र काल है, कि सर्वत्र पाल है, कि सर्वत्र हंता, कि सर्वत्र गंता, कि सर्वत्र पेखी, कि सर्वत्र पेखी, कि सर्वत्र काज है, कि सर्वत्र राज है, कि सर्वत्र शोक है, कि सर्वत्र पोख है, कि सर्वत्र त्राण है, कि सर्वत्र प्राण है, कि सर्वत्र देश है, कि सर्वत्र पेश है, कि सर्वत्र मान्य सदैव प्रधान्य, कि सर्वत्र जाप्य, कि सर्वत्र थाप्य, कि सर्वत्र पाने, कि सर्वत्र माने, कि सर्वत्र इंद्र है, कि सर्वत्र चंद्र है, कि सर्वं कली में, कि परमं फही में, कि आकल आला में, कि साहिब कला में, कि हुस्नल वजू हैं तमामुल रजू हैं, हमें सुलसला में सलीखत मुदा में, गनीमुल शिकस्त है, गरीबुल परस्त है, बिलंदुल मकाने, जमीनल जमाने, तमीजुल तमामे, रजूअल निधाने, हरीफुल अजी में, रजा एक यकीने, अनेकुल तरंग हैं, अपेद हैं, अपंग हैं, अजीजुल निवाज हैं, गनीमुल खिराज हैं, निरुक्कत स्वरूप हैं, तिरमुक्कत विभूत हैं, परभुक्कत परबा हैं, सुजुगत सुधा हैं, सदैवं स्वरूप हैं, अपेदी अनूप हैं, समस्तो पराज हैं, सदा सर्वसाज हैं, समस्तुल सलाम है, सदैवल अकाम है, निर्बाध स्वरूप है, अगाध अनूप है, ओंगादि रूपे अनादि स्वरूपे, अनंगी अनामी, तिरभंगी तिरकामी, तिरभर्गं तिरबादे, अगंजे अगाधे, सुभं सर्व पागे, सो सर्वा अनुरागे, त्रिभुक्त स्वरूप हैं, अछिज हैं, अछूत हैं, कि नरकं परनाश हैं, पृथ्व्योल परवास हैं, निरुक्कत प्रभा है, सदैवं सदा है, विभुक्त स्वरूप है, परजुगत अनूप है, निरुक्कत सदा है, विभुक्त प्रभा है, अनुक्कत स्वरूप है, परजुगत अनूप है, चाचरी छंद, अपंग है, अनंग है, अपेख है, अलेख है, अपरम है, अकर्म है, अनाद है, जुगाद है, अजय है, अव्यय है, अभूत है, अदूत है, अनास है, उदास है, अतंग है, अबंध है, अभक्त हैं, विरक्त हैं, अनास हैं, प्रकाश हैं, निचिंत हैं, सुनिंत हैं, अलिख हैं, अधिक हैं, अलेख हैं, अपेख हैं, अडा हैं, आगा हैं, असंभ हैं, आगम हैं, अनील हैं, अनाद हैं, अनित हैं, सुनित हैं, अजात हैं, आजाद हैं, अनित हैं, सुनित हैं, अजात हैं, आजाद हैं, चरपट छंद तप प्रसाद, सर्वं हंता, सर्वं गंता, सर्वं ख्याता, सर्वं ज्ञाता, सर्वं हर्ता, सर्वं कर्ता, सर्वं प्राणं, सर्वं प्राणं, सर्वं कर्मं, सर्वं कर्मं, सर्वं जुगता, सर्वं मुक्ता, रसावल छंद तप प्रसाद, नमो नरक नासे, सदैवं प्रकाशे, अनंगं स्वरूपे, अभंगं विभूते, परमार्थं परमार्थे, सदा सर्व साथे, अगाध स्वरूपे, निर्बाध विभूते, अनंगी अनामे, त्रिभंगी त्रिकामे, निर्भंगी स्वरूपे, सर्वंगी अनूपे, न पुत्र न पुत्र न सत्र न मित्र, न ताते न माते, न जाते न पाते, निरसाखं शरीक है, अमितो अमीक है, सदैवं परवा है, अजय है, अजा है, भगवती छंद तप प्रसाद, And gently please lie down for relaxation. And continue listening deeply for that vibration, for the love from the universe and the calling for what is to do next.
in your life for the harmony of all.
Om